ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लाइक हमारी लास्ट क्लास में हम पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग कर रहे थे, ठीक है। कुछ पार्ट छूट गया था तो वो फिनिश करके फिर मैं ट्रांसलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगी, तो फिर आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं एक अच्छे पैराफ्रेज का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, ताकि आप लोग जब पैराफ्रेजिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लो, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर का पेपर मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, आपने देखा ही था कि पैसेज था, उसके बाद कुछ पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसके बाद पैसेज के बेसिस पे ही पैराफ्रेज करवा लिया था, उसी के बेसिस पे डायलॉग राइटिंग, ये सब कुछ पैसेज पे ही उन्होंने करवा लिया था, ठीक है। तो क्योंकि अब ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही गया है कि आपका ओबीई ही होगा, ठीक है। तो इसलिए सेम पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार में, ठीक है। सो इट रिफ्रेसेस द सोर्स मटेरियल और प्रेजेंट्स ऑथर्स आइडिया इन राइटर्स ओन वर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप आइडिया सारे जो राइटर होगा आप उसके बताओगे, है ना, लेकिन अपने वर्ड्स में बताओगे, कोई भी चीज डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अगर डायरेक्ट कोटेशन है, ये सारी चीजें आप अवॉइड करना होता है इसमें, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, उसको आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना होता है, रिवर्ड करना होता है, रिफ्रेस करना होता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा क्लियर हो जाए रीडर के लिए। और ये बिल्कुल एक्यूरेट और फेयर होना चाहिए, जिसमें कि मतलब आपको अपना कोई पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन, अपनी नॉलेज नहीं ऐड करनी है। बिकॉज देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करते हैं कि आपको कितना पता है, वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपको कितना समझ में आया, ठीक है। देन इट इज साइटेड प्रॉपर्ली, ओके। देन कुछ इंपॉर्टेंस है पैराफ्रेजिंग का, ये बताते हैं, ठीक है। तो while writing one uses various sources of information to write something. Sometimes he or she incorporates the information verbatim and sometimes borrows the idea from the source text. And it is necessary to either quote the source of cited material or change in language, ठीक है। तो कभी कभी हम जैसे कि वैसे तो डायरेक्टली कॉपी करना कुछ भी मना किया गया जाता है, लेकिन अगर सपोज कोई कोट है ऐसा, अगर आप कॉपी करें तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि आपने हाँ कॉपी किया, तो उसके लिए आपको कोट्स में आपको जो है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम डिफाइन करें तो पैराफ्रेजिंग इज द एक्टिविटी ऑफ रीफ्रेजिंग द सोर्स मटेरियल और आइडिया इन वन्स ओन वर्ड्स. It allows the writer to examine the meaning of other writers' work, rephrase the idea or material, and craft it to suit her or his writing. It conveys the message that the writer has understood the source material as well as enhances her or his credibility as a writer. And paraphrasing is an important tool for non-fiction writers, essayists, and journalists. It allows the writer to incorporate the idea or material of other author in his or her work to improve the quality. And it also helps to integrate the source material without the use of so many direct quotations. It also protects the writer from the charge of plagiarism, है ना, बिकॉज जब आप कॉपी नहीं कर रहे हो कुछ, है ना, डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली आपको प्लेजरिज्म का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर सिंपली पैराफ्रेजिंग इट, आप रिफ्रेज कर रहे हो सारी चीजें। द राइटर पैराफ्रेजेस द इंफॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स व्हिच मेक्स द टेक्स्ट इजी टू कॉम्प्रिहेंड। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आपको बेसिकली और सिंपल बनाना है और क्लियर बनाना है, ठीक है, उसे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हाउ टू पैराफ्रेज अ टेक्स्ट, कैसे पैराफ्रेज करते हैं, ठीक है। सो जैसा कि बताइए कि भाई पैराफ्रेजिंग जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, भाई थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और आइडियाज ऑफ समवन एल्स इन वन्स ओन वर्ड्स। तो इसमें बेसिकली आप किसी और के आइडिया और फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में, आप उसके वर्ड्स नहीं कॉपी कर रहे हो एज इट इज, ठीक है। और इसमें द राइटर नीड्स टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू प्रिपेयर द पैराफ्रेज। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं, ठीक है, तो पैराफ्रेज करने के लिए। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स टू प्रिपेयर द पैराफ्रेज। तो रीड द टेक्स्ट ट्वाइस, थ्राइस और इवन 4 टाइम्स टू कॉम्प्रिहेंड इट कंप्लीटली। अब देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पैसेज है, कोई भी टेक्स्ट एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है कि इतना, नो डाउट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आ सकता है समझ में कि हाँ चलो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ टेक्स्ट में क्या है, लेकिन हाँ अगर आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, समरी बनानी है उसकी, तो फिर उसके लिए आपको 2, 3, 4, 5 बार पढ़ना पड़ता है पूरी तरह से समझने के लिए, ठीक है। देन फाइंड द सेंट्रल आइडिया एंड सब आइडियाज
and note down the key concepts. ठीक है, understand the tone of source text. Then जब आपने सेंट्रल आइडिया पता लग गया है, सब आइडिया पता लग गया, आपने की कॉन्सेप्ट्स नोट कर लिए हैं, ठीक है, और आपको टोन समझ में आ गई है सोर्स टेक्स्ट की, तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि यू नीड टू पुट द ओरिजिनल असाइड एंड राइट द पैराफ्रेज. ठीक है, स्टेट द आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स. अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो यही है कि आपको सारी चीजें अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करनी होती है, अपने वर्ड्स में आपको लिखनी होती है. देन कंपेयर द पैराफ्रेज विद द ओरिजिनल and make minor adjustments with the phrases that are too similar. ठीक है, then check the paraphrase for accurate tone and meaning. Also check the spellings and grammar. Then cite the source of information or idea. अब paraphrasing can be done with an individual sentence, a paragraph or more. ठीक है, आप एक सेंटेंस भी पैराग्राफ कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो, पूरा पैराग्राफ कर सकते हो या पूरा टेक्स्ट कर सकते हो. ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, मान लीजिए सक्सेस इज डिजायर्ड बाय ऑल. सक्सेस इज डिजायर्ड बाय ऑल. अब इसको अगर हम पैराफ्रेज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एवरीबडी डिजायर सक्सेस इन लाइफ या एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अब देखिए यहाँ पे बात वही कही जा रही है ना, आइडिया वही है, लेकिन आपने वर्ड्स का रिफ्रेज कर दिया है. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. ठीक है, there is no fixed rule about the length of a paraphrase. कोई फिक्स रूल नहीं है पैराफ्रेज की लेंथ का, जैसे कि फिक्स रूल होता है ना, समरी को आपको एग्जैक्टली उतने ही वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन ऐसा पैराफ्रेजिंग में नहीं होता है. ठीक है, पैराफ्रेजिंग जो है वो पैराफ्रेज कैन बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल, ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, और लॉन्गर देन द ओरिजिनल, बिकॉज sometimes it requires more words to explain something complicated. तो पैराफ्रेज किया हुआ पैसेज जो हमेशा ओरिजिनल से बड़ा, छोटा और बराबर भी हो सकता है. ठीक है, कुछ यूजफुल टिप्स है. तो the paraphrase should have same sense that of the original. Say what the original says and try to reproduce the ideas in the order of preference or emphasis. Then change the order of sentences. Start the first sentence with a different point than that of the original. Break the information into pieces and turn a long sentence into 2 or more sentences, or club 2 or more sentences and make them into one. Then change the sentence structure. जैसे कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बना सकते हो, पैसिव वॉइस को आप एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हो. Then use or more and more synonyms. आप ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम यूज कर सकते हो, बिकॉज एग्जैक्ट वर्ड तो वैसे भी यूज करना प्रोहिबिटेड होता है. ठीक है, the synonyms should give the same sense that of the original word. Then check the paraphrase against the original text for accurate tone and meaning. Then change the words and phrases that match the original too closely in order to avoid the charge of plagiarism. Then cite the source of information with author's name and page number on which it appears. ये important है कि the writer should not copy the information from the original text. ये मैंने कई बार रिपीट किया है, रिटेरिएट किया है कि ओरिजिनल टेक्स्ट से एग्जैक्टली वही चीज नहीं कॉपी करनी है. ठीक है, और इन केस राइटर वांट्स टू यूज द इंफॉर्मेशन वर्बैटिम फॉर द ओरिजिनल, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क्स एंड followed by the source within brackets. This term is called quoting, which protects the writer from the charge of plagiarism. लेकिन अगर सपोज अगर आप इंफॉर्मेशन अगर सेम वर्ड्स में अगर आप कॉपी कर रहे हैं ओरिजिनल से अपने रिफ्रेज्ड फॉर्म में, तो उसमें आपको बेसिकली कोटेशन मार्क के अंदर वो चीज लगानी है. इससे ये पता लगता है कि हाँ आपने ये सेंटेंस कहीं और से लिया हुआ. ठीक है, और जो भी सोर्स होगा फिर उसके बाद आप ब्रैकेट में लिख दोगे, और इसे एक कोटिंग बोलते हैं. और इसके जो है इसकी हेल्प से आपको कभी भी कोई आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा प्लेजरिज्म का. फॉर एग्जाम्पल, thermal pollution is a temperature change in natural water bodies caused by human influence, such as use of water as coolant in a power plant. अब देखिए ये कोटेशन मार्क में ये रखा गया और इसका सोर्स क्या है, विकिपीडिया. तो विकिपीडिया को ब्रैकेट में कर दिया है. ठीक है, अब पैराफ्रेज है. ठीक है, इसको आपको पैराफ्रेज करना होगा इस टेक्स्ट को. ठीक है, तो मैं ये सारी पीपीटी आज तीनों जो है यूनिट 4 की मैं ग्रुप पे सारे डाल दूंगी. ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो, लेकिन हाँ आपके उसके लिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ. द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी हैज सस्टेन्ड सिंस टाइम इमेमोरियल and has caused immeasurable damage to women. There are numerous references to the practice in our ancient books.
It was prevalent with the names Kanyadan and Tridan. Kanyadan meant giving one's daughter away in marriage to a person of good character, whereas Sridhan has been describing the money, jewelry, clothes, gifts, etc. that the bride received at the time of her marriage from her parents, relatives, or friends. But now it has taken in another sense. Earlier, the gifts given to the bride by her father were solely at his discretion, but later it got transformed into an evil practice. Dowry, which was earlier prevalent among Hindus, has extended to different communities along different caste and class lines. It has spread among Muslims, Christians, and other religions. It has become a symbol of social status. Each bridegroom carries a price tag which varies according to his physical appearance, physique, salary, position, income and affluence. ठीक है, तो इसे आपको पैराफ्रेज करना है. फिर है दूसरा, एक और है, ये भी आप करेंगे. ठीक है, सो ये है सक्सेस इज अ डिफिकल्ट टर्म टू डिफाइन. It can't be measured in physical dimensions and given a specific meaning. Success to one person can't be viewed as success to another. Some of the persons take it as fulfillment of dream, but different people have different dreams. For example, if one dreams of acquiring enormous wealth and becomes wealthy, it is her or his personal achievement. Wealth does not guarantee success. One can also be successful without wealth. Some other dreams of getting higher education and fulfills the dream. It is her or his academic success. But if she or he fails to secure a suitable employment, her or his success may be taken as failure. और इस पैसेज को आपको समराइज भी करना होगा और पैराफ्रेज भी करना होगा अपने वर्ड्स में. ठीक है, अब मैं दूसरा, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया. अब मैं दूसरा टॉपिक शेयर करती हूँ आपसे, जो कि है आपका ट्रांसलेशन. ठीक है, ये आपका बेसिकली लास्ट पार्ट है इस यूनिट का. ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, बिकॉज ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो दूसरी लैंग्वेज में लिखी होती है ना, और अगर उसे ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा तो बेसिकली जो लोग उस लैंग्वेज को जानते हैं बस वही वो चीज पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो वाइड रीडरशिप के लिए, ठीक है, वाइडर ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट करनी पड़ती है चीजें ऐसी लैंग्वेज में ताकि वो सब तक पहुंच पाए. अब जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो गीतांजलि थी वो ओरिजिनली बांग्ला में लिखी थी. ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी, और अगर उसे इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट किया गया होता तो उसे कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिलता. ठीक है, इसी तरह बाइबल को भी कितनी बार ट्रांसलेट किया गया है, फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है ना. सो बेसिकली क्या है कि हम लोग की जो कंट्री है, हम लोग की जो सोसाइटी है, वो बेसिकली मल्टी नेशनलिस्ट या मल्टी कल्चरलिस्ट है. ठीक है, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं, लैंग्वेज अलग होती है सबकी, है ना, सब लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, और ट्रांसलेशन की हेल्प से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से मीडिएट कर सकते हैं. ठीक है, और आज के टाइम पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो है ट्रांसलेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है. ठीक है, बिकॉज इसी की हेल्प से आप दूसरे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, so translation has acquired greater significance in today's globalized market by providing linguistic accessibility to the market forces, though much of it had been in vogue since centuries and played a creative role in dissemination of international cultures and eventually acculturation. अब अगर डिफाइन करना हुआ ट्रांसलेशन को कुछ इस तरह करेंगे. So translation is a process which transforms a text originally in one language into an equivalent text in a different language, retaining as far as possible the content of the message and the formal features and functional roles of the original text. और ये definition देखिए कोटेशन मार्क में, मतलब कहीं से उठाई गई, और किसने दिया है? रॉजर बेल. ठीक है, ट्रांसलेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ट्रांसलेशन एक बहुत ही ह्यूज कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है. ट्रांसलेशन लैंग्वेजेस से डील करती है और लैंग्वेज हमेशा इवॉल्व करती रहती है, एंड देयरफॉर ट्रांसलेशन आल्सो हैज एक्वायर्ड डिफरेंट डिमेंशंस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग लैंग्वेजेस.
ट्रांसलेशन रिक्वायर्स मच मोर स्किल देन नोइंग 2 लैंग्वेजेस। ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज का जानना नहीं जरूरी होता है ना, आपको उससे बड़ा स्किल आना चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप लिटरल उसमें नहीं ट्रांसलेट करते हो, है ना, आपको जो उसका एसेंस है वो चीज प्रेजेंट रहनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसलेशन में जो एक्चुअल फील होता है, जो एक्चुअल एसेंस है, वो कहीं खो जाता है, दैट गेट्स लॉस्ट समवेयर। तो उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए कि जो भी एसेंस है, जो भी मीनिंग है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। सो इवन अ नेटिव स्पीकर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज may not be a good translator vis-a-vis non-native speaker, as he or she may lack in the aptitude for translation. Translation requires many other skills and qualities obligatory for translation, like cultural, situational, and textual, in addition to the knowledge of the original and the target language. And discipline and continuous practice have no substitute in translation. तो आपको translation के लिए continuous practice is essential. Source language and target language are the terms related to translation from a particular language to a specific language. ठीक है, तो source language वो है जो कि original language है, जिसे आपको translate करना है, ठीक है। और target language वो है, वो basically जिसमें आप translate कर रहे हो। अब when you buy an electronic product, तो you get a manual or instruction booklet, ठीक है, हमेशा मिलती है, ठीक है, with it. So it is generally bilingual. Official invitation cards, parliamentary documents, question papers of other than language subjects are generally bilingual, most of the times English and Hindi or any other Indian language. A translator creates an image of an author and then sees it to become a reality in the real world. The role of a translator is not just confined to word-to-word translation, rather it is much deeper. कुछ टर्म्स है जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले है सोर्स लैंग्वेज, तो ये बेसिकली वो है जिससे ट्रांसलेशन किया जा रहा है, द ट्रांसलेशन, द लैंग्वेज फ्रॉम विच ट्रांसलेशन इज डन। दूसरा इस इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो टारगेट लैंग्वेज होती है। तो द लैंग्वेज टू विच ट्रांसलेशन इज डन इज नोन एज टारगेट लैंग्वेज। फिर है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई है अभी, लेकिन हाँ फिर से देखते हैं। So it is the same as we have studied earlier, and in the context of translation, it is meaning to translation, or in other words, dynamic equivalence. Next important word जो कि है equivalence, ठीक है। So equivalence जो है, broadly speaking, it is a kind of similarity between two languages, not sameness, which could be at the level of meaning, word meaning, structure, grammar, etc. No two words are synonyms in two languages. While translating from one language to the other, one looks for approximation rather than sameness. The word sameness may have the following synonyms: similarity, regularity, evenness, consistency, uniformity, monotony, repetitiveness. Similarly, one may not find equivalence in the target language. फिर है next important word जो कि है negotiation. So ये भी एक essential और important feature है translation का, and it is the area between cultures, text, writer and reader, original text and the translated text, where the gap between what is known and unknown is prevalent, and the space is full of uncertainty and tension. Dominance of the source language and of source culture submission, the target language feels proud. In the case of English, Indian people take pride in using words like awesome, cool, and hot. Resistance in the target language to accept, etc. are related to negotiation. Next important term है acculturation. So it is related to the cultural distinctness of the original language and the negotiation on this level to find equivalence. Advertisements all over the world look like American advertisements is an example of acculturation. Adaptation, next important word है. So it is relegated to the periphery of faithfulness, where the person adapting or translating it takes liberty in content and expression. You would have heard of the term in reference to theatre and films.
Shakespeare's plays have been adapted into some Hindi films too. Some other writers' works have also been adapted into theatre and movies. The next important word is transliteration. So it is conversion of script from one language to another. It is one-to-one mapping from one system to another. For example, a Hindi word aankh can be written in Roman script instead of the usual Devanagari one as aankh, for which English equivalent is eye. Then types of translation hai. So broadly speaking, it can be categorized as non-literary, that is academic translation, or literary, that is creative translation. So for these types of translation, mainly two approaches are adopted. सबसे पहले तो literal translation है for non-literary text, then idiomatic translation है for literary text. So literal translation for non-literary text के बारे में बात करते हैं. So literary word for word translation is perceived as non-figurative and not having specific contextual meaning. Literal is basically the meaning of a word which can be found in a dictionary held by the word itself. Therefore, in literal translation, the exact words and grammar structure are translated faithfully the same way in the target language also. Faithfulness is in a way one-to-one equivalence, and one-to-word, one word for word, same order maintained translation is called interlinear translation, in which grammatical structure also remains the similar, though this approach also seems to be unnatural. अब जैसे example है, अगर हम बोलेंगे literal translation for non-literary text, ठीक है? तो एग्जाम्पल है जैसे कि सरकार ने दिल्ली से आगरा के बीच बुलेट ट्रेन की मंजूरी दे दी है, ठीक है? तो इसका ट्रांसलेशन है The government has approved the bullet train between Delhi and Agra. ठीक है? तो most of the administrative and technical translation comes in this category. Manuals, parliamentary documents, bilingual websites, etc. are examples of literal translation. Does not stop a translator to be creative in translation, though faithfulness to the source text and the language remains primary focus. The next is idiomatic translation for literary text. So this type of translation is basically reproduction of the original text. In other words, idiomatic translation keeps into account meaning to meaning changes while translating. It is mainly used for literary translation. Old classics and the present masterpieces written in regional languages may become accessible through such translation. Free translation is for meaning may vary according to one's interpretation and inference of meaning. अब जैसे कि देखते हैं ये क्या है, एग्जाम्पल है उसका जीवन वसंत विहार था. तो इसका मतलब क्या है? He was in the prime of youth. ये कुछ है आपके ओरिजिनल लिटरल ट्रांसलेशन है और इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, ठीक है? तो ओरिजिनल में है वो औरत का दिल था, वो बोल रहा था, जो बोल रहा था, बोले ही जा रहा था युगों से. वो औरत का दिल था जो चुप था, चुप चला आ रहा था सदियों से, और इनके बीच एक पहाड़ था, एक आदमी या एक चूहा जो कुतर रहा था. मित्र क्षणों में भी चित्कार करती आवाज को सुन्न हुई जुबान को पहले ही दिन से. ठीक है? अब अगर लिटरली ट्रांसलेट इसे किया गया तो कुछ ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा. That very same incident, it was women's heart which was speaking, kept on speaking for ages. It was women's heart which was silent, stayed silent for centuries. And between them there was a mountain, a man, a rat, which was gnawing even in moments of friendship, at the screaming voice, at the silent tongue from the very first day.
और अगर इसी को idiomatic ट्रांसलेशन करना हुआ तो कुछ इस तरह से होगा. It happens again. It was a woman's heart that was speaking, had been speaking for ages. It was a woman's heart that was silent, had been silent for centuries. And between them, there was a mountain, a man or a rat that not even in times of friendship, at the screaming voice, at the silent tongue from the very first day. अब इसके बाद important समझते हैं थोड़ा ट्रांसलेशन का, ठीक है? So the world has turned into a global village, ठीक है? There's a lot of globalization and multiculturalism. So we need to communicate with using the people of different countries. As each country has its own language, translation helps us in understanding the message of the person using other language. It helps in bringing the people of different countries closer to each other. Translation has also been a vital component of grammar translation method of teaching English in India. It has proved a very viable and productive technique of learning the target language. It is a proven fact that the structure of a foreign language is best learned when compared and contrasted with that of the mother tongue. It also helps in the field of education. One can read the translated books and material available in other languages. फिर आते हैं बहुत ही important word जो कि है code switching and it is related to translation. So code switching refers to the situation where a person during the conversation switches from one dialect or language to the other. For example, when you talk to your friend in a dialect, but at the same time you may use standard variety of that language while talking to your teacher. कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे कि कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, अभी जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाया, अभी फिर मैं हिंदी में शिफ्ट हो गई, है ना पूरा. तो जब आप इंग्लिश से डायरेक्टली पूरा सेंटेंस हिंदी में शिफ्ट कर देते हैं, है ना, तो उस केस को कोड स्विचिंग कहते हैं, ठीक है. Similar situation may occur when you talk to your family member and at the same time talk to your friend. You may talk with your family in your mother tongue but talk with your friend in English or some standard language. अब जैसे for example, a boy Mohit is talking to his friend Naresh. ठीक है, एक लड़का है मोहित जो अपने फ्रेंड नरेश से बात कर रहा है. He is not feeling well and does not want to go to his college. He asks about tomorrow's class from Naresh. At the same time, he talks to his mother. He talks to his mother, ठीक है? He talks to his friend in English but talks to his mother in Hindi. अब देखिए जरा, ये है आपका कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल, ठीक? तो मोहित जो है वो बोलता है हाय नरेश, हाउ आर यू? फिर नरेश कहता है आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? फिर मोहित कहता है आई हैवंट बीन फीलिंग वेल, आई हैव हेडेक एज वेल एज फीवर. फिर नरेश बोलता है यू शुड टेक रेस्ट. मोहित व्हाट अबाउट टुमारोज क्लास? इवन आई डिडंट अटेंड टुडेज क्लास. देन नरेश सेज sir has told that there will be class tomorrow. He will discuss an important topic in the class. Then Mohit, अब देखिए पूरी कोड स्विचिंग हो गई. अभी यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, अब ये देखिए अपनी मदर से पूरा हिंदी में बात करेगा, पूरा सेंटेंस अब हिंदी में हो जाएगा. देखिए मम्मा मेरी जरूरी क्लास, कल मेरी जरूरी क्लास है, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा. मदर बोलती है पर बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है. Then मोहित सेज मैं दवाई ले लूंगा, मैं क्लास नहीं छोड़ सकता. मदर देख लो बेटा, पर अभी डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर वे कहें तो चले जाना. मोहित ओके नरेश, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अटेंड द क्लास. अब देखिए फिर से ये इंग्लिश पे, हिंदी से इंग्लिश पे आ गया, कोड स्विचिंग फिर से इसने कर लिया, ठीक है. तो जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे जब आप शिफ्ट कर जाते हो, ठीक है, स्विच कर जाते हो, तो उसी को कोड स्विचिंग कहते हैं. Naresh, take care. If you don't feel well, please skip the class. I will provide you the notes. Mohit, I will see. Thank you, Naresh. Bye. Naresh says bye. ठीक है. अब आते हैं कोड मिक्सिंग पे. ये तो था कोड स्विचिंग, ठीक है. अब कोड मिक्सिंग पे आते हैं.
तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम एक ही सेंटेंस बोलते टाइम उसमें हिंदी इंग्लिश या बहुत सारी लैंग्वेज मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जब एक ही सेंटेंस में बहुत सारी लैंग्वेज हम मिक्स कर देते हैं उसी को कोड स्विचिंग कहते हैं, कोड मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। सो कोड मिक्सिंग इज अ सिचुएशन when a person mixes the codes of two or more languages in a sentence or message. The words of one language is mixed with the words of the other language. We generally find this situation in our daily life. We mix the words of two or more languages in our conversation. For example, friends Shikha and Rohan are talking to each other. They mix the words of English and Hindi in the conversation. अब यहाँ देखते हैं शिखा एंड रोहन, दे आर टू फ्रेंड्स एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और यहाँ पे वो कोड मिक्सिंग कर रहे हैं, वो इंग्लिश और हिंदी को अपने कॉन्वर्सेशन में मिला के बात कर रहे हैं। देखिए शिखा, हाय रोहन, कल तुम कॉलेज जाओगे क्या? रोहन, अभी तक तो प्लान है। शिखा, मेरा तो मूड नहीं है। देन रोहन सेज, यार आ जाना, तुम्हारे बिना टाइम पास नहीं होगा। देन शिखा सेज, पर कल मुझे घर पर कुछ अर्जेंट वर्क है। रोहन, थोड़ा जल्दी आ जाना। शिखा, ओके देखती हूँ, सुबह ही डिसाइड करूंगी। रोहन, देख लेना, प्लीज ट्राई करना। शिखा, ओके मैं पूरी तरह ट्राई करूंगी, पर तुम मेरे लिए नोट जरूर रख लेना। रोहन, मैं पक्का रख लूंगा। ओके, होप करता हूँ सवेरे मिलेंगे, बाय। देन शिखा सेज बाय। अब देखिए इस कॉन्वर्सेशन में आप देख सकते हो कि कोड मिक्सिंग हो रही है, दो लैंग्वेजेस मिक्स करके लिख रहे हैं एक ही सेंटेंसेस में। देखिए दो लैंग्वेज मिक्स हो रही है। दिस इज व्हाट कोड मिक्सिंग इज ऑल अबाउट। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड थॉरो नॉलेज ऑफ बोथ द सोर्स लैंग्वेज एज वेल एज द टारगेट लैंग्वेज। तो किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों की प्रैक्टिस जरूरी होती है। Knowledge of the subject on which the source text is based is also necessary for a translator. The translator reads the text, translates the words as well as meaning of the text into target language. Modern day translators use sophisticated tools and technology to accomplish their work. They rely on software applications to simplify and streamline their tasks. Though technology has the advantage of translation, but it has certain flaws. Technology no doubt translate कर लेगी, बस कुछ flaws होते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपका सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी सही रहेगा, जो एसेंस रहेगा ना, जो एक्चुअल मतलब रहेगा वो कहीं खो जाएगा, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एन इजी वे ऑफ ट्रांसलेशन, बट it is not applicable to all translation activities. It is fit for only the text which contains set vocabulary and set patterns of grammar. It cannot substitute the role of a translator. No doubt, machine translation can help a translator in making the first draft, which can be reworked and edited manually by the translator. But human intervention is essential in this case as well. The process of translation involves multiple steps. Translation is a complex activity because no two languages share same structures of grammar and composition. For example, Hindi follows an S plus O plus V order as its basic pattern, whereas English follows an S plus V plus O order. ठीक है, अब जैसे देखिए हिंदी में हम वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, SOV ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोथ ऑफ देम स्टडी इन द सेम क्लास. So it is necessary for a translator to study basic structures of both the source language as well target language, and he or she should be familiar with subject of the source text. He or she should have knowledge of background and culture of the text. Sometimes there can be idiomatic expressions which cannot be translated through word-to-word translation method. The translator should translate them by sense for sense technique. Translation has been used by human beings for centuries, and there can be different kinds of translations. It can be mental as well as physical.
Mental translation takes place within the mind of an individual. She or he reads or listens to the message in one language, that is the source language, and translates the same within her or his mind into target language. The other type is physical translation or written translation. The translator finds a text in one language and translates it into the target language in written mode. वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इसमें एक एक वर्ड को जो है ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है. So it is the form in which the translator translates each and every word of the text into target language. He or she finds the equivalent of the words of source language in the target language, preserves the meaning, and rearranges them to fit the syntax of target language. It aims at literal meaning of the words and does not pay heed towards context and socio-cultural attributes of the expression, and that is why it is known as literal translation. It is best suited to bilingual or multilingual situations, but it is considered as inferior form of translation because it has certain drawbacks. Many a times it is difficult to find exact equivalence of each word in the target language because of different cultural or other factors. देखो जब ट्रांसलेशन करते हैं हम तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है. एज इन कभी कभी क्या होता है कि हम टारगेट लैंग्वेज में हमें एक्चुअल वर्ड जो है इक्वल वर्ड नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. डिफरेंट कल्चर में भाई है हम लोग, है ना, तो जरूरी नहीं कि ये कि आपको ओरिजिनल वर्ड का सब्स्टिट्यूट मिल जाए टारगेट लैंग्वेज में. तो दीज आर डिफिकल्टीज दैट अराइज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड समटाइम्स इट लैक्स नेचुरल फ्लो ऑफ द सोर्स टेक्स्ट. It is not fit for the translation of proverbs, idioms, and metaphors. The word semantics stands for study of meaning. ठीक है, now talking about semantics translation. ठीक है, तो the word semantics stands for study of meaning. तो semantic translation includes the translation of meaning of an expression. तो यहाँ पे word to word translation नहीं होता, यहाँ पे बस ये होता है कि जो एक्चुअल सेंस है, जो मीनिंग है, वो किसी तरह ट्रांसलेट हो जाए और वो कहीं ना खोए बीच में, ठीक है. सो सिमेंटिक ट्रांसलेशन इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन. द ट्रांसलेटर डज नॉट ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, rather pays careful attention to the meaning in light of source language and conveys the same meaning in target language. And semantic translation, it is a method of sense for sense translation. It takes the context and socio-cultural factors of source text into account, and it requires some amount of adjustment. It is also known as free translation because यहाँ पे आप एक एक word नहीं translate कर, यहाँ पे आप generally क्या कर रहे हो, meaning translate कर. So it is also known as free translation, and it is suitable for all kinds of texts. Proverbs, idioms, and metaphors are translated with the help of this method. Functional translation is a part of semantic translation. The term functional means relating to function, and it is a meaning-based translation. The translator presents the thoughts of the writer of the source text into target language, rather words or form. The translator reads the source text, understands the thought, and writes down the thought into target language. Forms of source language are not important in this method because they can be different rather than that of the target language. The translator focuses on the function in terms of context of the source text as well as situation. For example, if a translator is to translate the brochure for a foreigner, ठीक है, अब ट्रांसलेटर को क्या करना है कि उससे एक ब्रोशर जो है ट्रांसलेट करना है फॉरेनर के लिए किसी, तो it would be written with substantially different content than for those who live in the same country, as the foreigner may not be aware of local history and culture. ठीक है, तो उसे फिर उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसलेट करके. ठीक है,
And functional translation is also suitable to translate idiomatic expressions. फिर आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, जो कि है ट्रांसक्रिएशन. तो ट्रांसक्रिएशन को क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है. So it is the process of developing or adapting a text from one language to the other without any change in meaning, intent, style, tone, context and emotions of the source material, ठीक है. And basically ये क्या है कि it is the process of taking a concept in one language and recreating it into another. आपने एक लैंग्वेज में आपने कॉन्सेप्ट को लिया और अगले लैंग्वेज में आपने रिक्रिएट कर दिया. It is carried out for a particular purpose and specific audience, ठीक है. And it includes not only translation of content but also copywriting, image selection, change in font and other transformations. And this technique is commonly used by advertising and marketing professionals. Transcreation, it is a complex activity and performed by a highly specialized linguist. Beyond the language, she or he takes care of context, culture, content, expertise, and writing skills. She or he recreates, reproduces, and gives new life to the source material. It doesn't mean that she or he creates it from the scratch, but can change the content substantially. And she or he tries to evoke the same emotions and implications in the target language as they do in source language. Then there are some useful tips for translators. So the basic requirement of translation is appropriate and meaningful transference of substance and ideas from one language to another. It conveys original tone and intent of a message, considering cultural and regional differences between source and target languages. Sometimes exact equivalents are not available in target language. Hence, literal translation becomes impossible. कभी-कभी क्या होता है कि exact equivalent नहीं available होता है target language में, ठीक है. तो उसके लिए जो है basically literal translation फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है. So, और अगर ऐसा होता है तो उसकी में क्या होता है ऐसे केस में कि फिर जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपका एम होता है ट्रांसलेशन का, वो अचीव नहीं हो पाता है, बिकॉज आपको जब इक्विवेलेंट वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर देन देयर विल बी अ डिफिकल्टी. सो द ट्रांसलेटर should ensure that the sense and the meaning embodied in the source text are neither distorted nor misplaced. Idiomatic sentences should be taken care of specially. The translator should keep the following points in mind. Read the text carefully and find out the equivalent of the words of the source language into target language. Split the long sentences into short ones. Avoid only literal translation. Rather, translate words as well as emotions. Derive the meaning in the context of source text. Then prepare a rough draft, taking care of idioms and structure of the vernacular. Make necessary changes in the rough draft. Then the translated piece should be legible, flawless, and without cutting. Then the translation should carry the stamp of the original and convey the same. ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट 4 कंप्लीट होता है, ठीक है. और यूनिट 4 के बाद मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखाना चाहूंगी लास्ट ईयर का, ठीक है, ओबीई का, बिकॉज इस बार तो अब क्लियर हो चुका है कि ओबीई ही आएगा, है ना. तो एक मिनट, जस्ट सेकेंड प्लीज. हाँ, बिकॉज इस बार जब क्लियर हो चुका है कि ओबीई ही आएगा, है ना, तो एक बार जरा वो भी देख लेंगे हम लोग कि क्या है एग्जैक्टली. ठीक, आई थिंक मैंने दिखाया भी था शायद आपको ना वो लास्ट टाइम पेपर आपको. खैर अभी मुझे दिख नहीं रहा है, बट हाँ उसके सब्स्टिट्यूट पे मैं ये कर सकती हूँ आपके साथ कि ओबीई की जगह मैं आपको
आपकी AECC की बुकलेट दिखा सकती हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है काफी, और जो बेसिकली आपको मैं आज शेयर कर दूंगी। और हाँ, यूनिट 4 का जितना भी है, ठीक है, वो मैं आज शेयर कर दूंगी सारे ग्रुप्स पे, ओके। और प्लस ये बुकलेट भी शेयर कर दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करें, है ना। इसके अगर आप ये बुकलेट प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा ना कि आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बिकॉज इसमें जितने भी इसमें टेक्स्ट हैं, ये बेसिकली आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट हैं AECC के, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली यही है कि वही पैसेज दिया है, और जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना OBE में, एग्जैक्टली वही सारी चीजें, ठीक है। दिखाते हैं हम आपको, जैसे एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये पैसेज है आपका, ठीक, इसका नाम है जनरल योर टैंक इज अ पावरफुल व्हीकल, और ये बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने लिखा है ये पीस। तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट, a German poet, playwright and theater director, was an influential literary figure of the 20th century. He started writing newspaper articles, including theater reviews, at the age of 18. When he was 19, he won for his first 3 plays the Kleist Prize, Germany's most prestigious literary award at the time. He is associated with the new Sachlichkeit, new objectivity movement in German art, associated with a collaborative approach to artistic production and with the experimental genre Aecc theatre. He has written hundreds of poems and many plays such as Mother Courage and Her Children and The Good Person of Sheshwan. A committed Marxist all his life, he expressed his opinion to the nationalist, socialist, and fascist movements of Europe through his creative and theoretical writings. As a result, he had to leave Germany in 1933, fearing persecution by Hitler's regime, and ultimately went to America after Hitler proceeded to invade most of Europe. Even in America, his extreme communist political views resulted in his being targeted by the government. His writings advocate independent thinking and anti-establishment political action. General, Your Tank is a Powerful Vehicle was probably written between the 2 world wars. Here he underscores the power of critical thought as the ultimate weapon against war and oppression. So, General, your tank is a powerful vehicle. It smashes down forests and crushes 100 men. But it has one defect. It needs a driver. General, your bomber is powerful, but it has one defect. It needs a mechanic. General, man is very useful. He can fly and he can kill. But he has one defect. He can think. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पैसेज से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। हम जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखने के लिए बोल दिया, राइट अ स्पीच फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स बेनिफिट्स टू सोसाइटी, यूज रेपिटेशन इन योर स्पीच टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ठीक इसी तरह कुछ आ सकता है आपके एग्जाम में भी कि कोई पैसेज है कोई, उसके बाद फिर पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि स्पीच है, डायलॉग राइटिंग है, सब कुछ उसी हिसाब से पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक है, ये है व्हाई आई वांट अ वाइफ। ठीक है, ये भी एक बार देख लेंगे जरा, ये भी आपके कोर्स में ही है, प्रिस्क्राइब रीडिंग में है। ठीक है, ये मैं बुकलेट शेयर कर दूंगी ताकि सब प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो जूडी बार्डी ने लिखा था ये। तो जूडी बार्डी was an American feminist, a political and environmental activist, and a freelance writer. She was part of what was then known as the women's liberation movement. Women were fighting for multiple social and political rights and had won the right to vote and finally the right to an abortion. However, the women's movement was an ongoing battle, and Brady, like other activists, fought it on several fronts. She became a prominent figure in the West Coast women's liberation movement. Her classic way, Why I Want a Essay, her classic essay, Why I Want a Wife, was first published in the first issue of Miss magazine in 1972 and reprinted as Why I Still Want a Wife in Miss in 1990. For the first publication, she used her married name of Cyphers,
but subsequently used her maiden name Brady as an early declaration of independence from marital convention. She first read her essay in San Francisco to a crowd celebrating the 50th anniversary of the 19th Amendment that gave American women the right to vote. अब ये है वो piece why I want a wife, ठीक है? So I belong to that classification of people known as wives. I am a wife and not altogether incidentally I am a mother. Not too long ago, a male friend of mine appeared on the scene, fresh from a recent divorce. He had one child who is, of course, with his ex-wife. He is looking for another wife. As I thought about him while I was ironing one evening, it suddenly occurred to me that I too would like to have a wife. Why do I want a wife? I would like to go back to school so that I can become economically independent, support myself, and if need be, support those dependent upon me. I want a wife who will work and send me to school. And while I'm going to school, I want a wife to take care of my children. I want a wife to keep track of the children's doctor and dentist appointments and to keep track of mine too. I want a wife to make sure my children eat properly and are kept clean. I want a wife who will wash the children's clothes and keep them mended. I want a wife who is a good nurturant, attendant to my children, who arranges for their schooling, makes sure that they have an adequate social life with their peers, takes them to the park, the zoo, etc. I want a wife who takes care of the children when they are sick. A wife who arranges to be around when the children need special care because, of course, I cannot miss classes at school. My wife must arrange to lose time at work and not lose the job. It may mean a small cut in my wife's income from time to time, but I guess I can tolerate that. Needless to say, my wife will arrange and pay for the care of the children while my wife is working. I want a wife who will take care of my physical needs. I want a wife who will keep my house clean. A wife who will pick up after my children. A wife who will pick up after me. I want a wife who will keep my clothes clean, ironed, mended, replaced when need to be, and who will see to it that my personal things are kept in their proper place so that I can find what I need the minute I need it. I want a wife who cooks the meals, a wife who is a good cook. I want a wife who will plan the menus, do the necessary grocery shopping, prepare the meals, serve them pleasantly, and then do the cleaning up while I do my study. I want a wife who will care for me when I am sick and sympathize with my pain and loss of time from school. I want a wife to go along when our family takes a vacation so that someone can continue to take care for me and my children when I need a rest and change of scene. I want a wife who will not bother me with rambling complaints about a wife's duties. But I want a wife who will listen to me when I feel the need to explain a rather difficult point I've come across in my course studies. And I want a wife who will type my papers for me when I've written them. I want a wife who will take care of the details of my social life. When my wife and I are invited out by my friends, I want a wife who will take care of the babysitting arrangements. When I meet people at school that I like and want to entertain, I want a wife who will have the house clean, will prepare a special meal, serve it to me and my friends, and not interrupt when I talk about things that interest me and my friends. I want a wife who will have arranged that the children are fed and ready for bed before my guests arrive, so that the children do not bother us. I want a wife who takes care of the needs of my guests so that they feel comfortable, who makes sure that they have an ashtray, that they are past the horse divorce, and they are offered a second helping of food, that their wine glasses are replenished when necessary, that their coffee is served to them as they like it. And I want a wife who knows that sometimes I need a night out by myself. I want a wife who is sensitive to my sexual needs, a wife who makes love passionately and eagerly when I feel like it.
A wife who makes sure that I am satisfied. And of course, I want a wife who will not demand sexual attention when I'm not in the mood for it. I want a wife who assumes the complete responsibility for birth control. I do not have to clutter up my intellectual life with jealousies. And I want a wife who understands that my sexual needs may entail more than strict adherence to monogamy. I must, after all, be able to relate to people as fully as possible. If by chance I find another person more suitable as a wife than the wife I already have, I want the liberty to replace my present wife with another wife. Naturally, I will expect a fresh new life. My wife will take the children and will be solely responsible for them so that I am left free. When I am through with school and have a job, I want a wife to quit working and remain at home so that my wife can more fully and completely take care of a wife studio. My God, who wouldn't want a wife? ठीक है, अब जैसे ये पैसेज है, ठीक, एग्जाम में आ गया, लास्ट टाइम भी ऐसे ही आया था एक पैसेज, ठीक, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जिसे हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. By describing a typical wife, what is Brady actually saying about typical wives? What is the central argument of the text? Question number 2. While discussing wives, what kinds of evidence does the author present in support of her point? How is a wife defined? What are her duties? Question number 3. What kind of reader does the text seek to persuade? Why do you think Brady focuses on this population of readers? Question number 4. The title states that Brady would like a wife for herself. The phrase "I want a wife" is repeated multiple times in the text. Does this mean that Brady approves of typical wives? Does she really want a wife, or are the title and the essay ironical? If so, how so? Question number 5. How do you think women reading this article would respond? Would different kinds of women respond in different ways? Likewise, how do you think men would respond? In question number 6, what kind of person is a speaker? Is she a typical wife herself? In that case, why would she too want a wife? Question number 7. In order to be called an ideal wife, a woman needs to fulfill multiple tasks. What would the male equivalent of this wife be like? How does our society define an ideal husband? Does an ideal husband need to fulfill similar tasks? ठीक है, ये तो पैसेज बेस्ड हो गया. फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. जैसे देखिए, डायलॉग लिखना है आपको इसी के बेसिस पे, ठीक है. Write an interpersonal dialogue between two friends, a wife and a single woman, in which they are debating the disadvantages and advantages of being either married or single. तो ये बुकलेट में शेयर कर दूंगी, ठीक. ये आपके प्रेस्क्राइब्ड है, ये है ना, और इसमें आप ये सब सॉल्व भी करेंगे आप लोग. हर एक चीज के बाद एक कुछ क्वेश्चंस है, फिर एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस है, ठीक है. तो ये जो है पूरा करेंगे, मैं शेयर कर दूंगी सबके साथ. ओके, अब देखिए इस वाले के पास जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्या है. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर प्रिंसिपल ड्रॉइंग हर अटेंशन टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन योर कॉलेज. दूसरा क्वेश्चन है, write an intrapersonal monologue in which a woman speaks to herself about this entire incident. Note, she will retell the story from her point of view. ठीक है, तो इसमें देखिए पूरा रिलेट करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. देखो ये है, अब यहाँ पर देखो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन बेस्ड भी है, देख रहे हैं, है ना. तो कुछ ऐसा ही आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है. लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं पेपर शेयर कर लूँ आपसे. एक बार शेयर भी मैंने किया था, है ना, और मैं ये वाली बुकलेट प्लस यूनिट 4 के जितना भी मैंने पढ़ाया है वो मैं शेयर कर दूंगी सारे ग्रुप्स में. ओके, अब देखिए इस वाले पैसेज के बाद देखिए ये है ना, माई यंग मैन शैल नॉट वर्क. इसके बाद देखिए पैसेज बेस्ड के बाद रिपोर्ट आपको लिखनी है. राइट अ रिपोर्ट ऑन होमवर्क एंड पनिशमेंट इन स्कूल फॉर पॉलिसी. तो इसी तरह से करना होगा आपको एग्जाम में काम, ठीक है. और पेपर आसान है, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है. सबसे बड़ी बात यह कि क्लियर कर दिया गया है अभी के अभी कि आपका ओबी होगा, है ना. तो उस केस में आप अच्छे से करें. अब देखिए जैसे ये है, देख रहे हैं, ये दिया हुआ है ना. उसके बाद देखिए इसका पैराफ्रेज लिखना है पोएम का, है ना. तो ये चीज जो है करेंगे आप लोग, ये प्रैक्टिस कर लेंगे. बहुत अच्छी बुकलेट है, आपके प्रेस्क्राइब्ड है, ये आपके सिलेबस में, ठीक.
और इसकी हेल्प से आपका काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम में, है ना। अब एग्जैक्टली यही चीज़ें तो नहीं है एग्जाम में आएंगी, लेकिन हाँ आपको करने का तरीका ज़रूर पता लग जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है।